Hello class 8. Today we are solving question number 1 of exercise 4.2. The first question is construct a quadrilateral LIFT where the measurements are given LI 4 cm, IF 3 cm, TL 2.5 cm, LF 4.5 cm and IT 4 cm. First of all we have to recognize which are sides and which are diagonals. तो पहले sides देख लेते हैं. Sides will be as I told you in a continuous series. The sides will be in continuous series means LI sides हो जाएंगी LI, IF, FT and TL ये 4 sides हो जाएंगे. And diagonals कौन से हो जाएंगे जो स्किप करके होते हैं. तो L and F will be one diagonal and I and T will be another diagonal. I and T second diagonal हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने रिकग्नाइज कर लिया. नाउ वी हैव टू मेक अ रफ डायग्राम. सो फर्स्ट अब LIFT है तो कंटिन्यूस सीरीज ले लेते हैं. इट विल बी लाइक F and T, LIFT इस तरह से आएगा and LIFT ऐसे भी हो सकता है. इट कैन बी LIF and T ऐसे भी हो सकता है. इट विल बी लाइक दिस वे कैसे भी हो सकता है बट इन अ कंटिन्यूस सीरीज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हो सकता है. तो टेक एज वी आर constructing this way. तो LI का measurement क्या है? LI will be 4 cm, IF is given 3 cm, TL this is given 2.5 cm, then LF is this diagonal, तो diagonal आपका आ गया 4.5 cm. IT this is this IT will be 4 cm. This IT is 4 cm. Now this way we have to construct this quadrilateral. तो ये आपका रफ स्केच है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. दैट इज़ 4 cm. From 4 cm we drawing. So it is 1, 2, 3 and 4 cm. This is LI. Name it as L and I. Okay. Now from LI अब हमें कौन सा पॉइंट निकालना है. LI से टच करते हुए either we can go for this T or we can go for this F. या तो F को लोकेट करेंगे या T को लोकेट करेंगे. फर्स्ट वी आर लोकेटिंग दिस पॉइंट F. तो डिस्टेंस फ्रॉम L to F is 4.5. तो नाउ मेज़र 4.5 फ्रॉम योर स्केल एंड दिस कंपास. 4.5 को हमने मेज़र किया. ओके. नाउ दिस इज़ 4.5 फ्रॉम L टूवर्ड्स दिस वी आर 4.5. दिस इज़ 4.5. नाउ फ्रॉम I it is 3 cm. From I it is 3 cm. Is 3 cm from I, so it is 3 cm from I. So this point, this intersecting point, this point is F. This point is F. Now from F, now we don't know the distance between TF. TF is not given. अब हमें क्या find out करना है? This T. तो from L the distance is 2.5. 2.5 will mark 2.5 from the scale using this compass. 2.5 this is 2.5 scale से करा. तो from L it is 2.5. this is 2.5. Now from I to is T. I to T that is 4.5 again. Now and this I to T that is
4 centimeter. From this we will locate 4 centimeter with the help of this compass and this, that is 4 centimeter. 4 centimeter exactly. Now from I to this it is 4 centimeter. Okay, now the name of this is F and this is T. Now join these points, join I to F, this T to F, T to F, F to I to L, T to L, T to I, and L and F. This is the required quadrilateral that's need. Now we will write the measurement, that is 4 centimeter, this is 3 centimeter, and this is not given, so we will not write it. This is 2.5 centimeter, and this length is 4.5 centimeter, this length is 4.5 centimeter, and this is 4 centimeter.